हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन PHLECSER। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ किया जाता है, जो इल्यूमिनेटिंग पावर होती है, टू सोर्स की इल्यूमिनेटिंग पावर को कंपेयर करने के लिए। इसकी डेफिनेशन होगी, photometer is an instrument which can be used for comparing the illuminating power of two sources. Sources is called photometer. So according to definition, we will consider here a screen X and Y. This is a screen, and consider two identical source. This is source S1 and this is source S2, and distance from source and screen this side is 4 S1 के लिए R1 and distance from screen to source 4 S2 के लिए R2। पहले हम इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन फॉर S1 के लिए लिखते हैं, तो क्या होगी E1 इक्वल टू, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, I/R1 का होल स्क्वायर। ये S1 के लिए है, तो दिस इज फॉर S1 so I1, and similarly for S2 so for S2 equal to I2 and divide by R2 square, if means appears if both side x and y appear to be equal bright and their same nature, so we can write intensity of E1 equal to E2. So from here we get I1 divide by R1, so सेपरेट कर लेंगे हम इंटेंसिटी को एक साइड एंड डिस्टेंस को एक साइड, सो I1/I2 और हियर R1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय R2 होल स्क्वायर। सो ये रेशियो बताता है हमें illuminating power of two sources
is equal to ratio of square of their respective distance from screen, where they produce same brightness. इसी प्रिंसिपल को हम फोटोमीटर बोलते हैं. दिस प्रिंसिपल इज नोन एज ए फोटोमीटर. सो अभी जो रेशियो हमने कैलकुलेट किया है उसको लैंग्वेज की फॉर्म में थोड़ा लिख लेते हैं. I1/I2. दिस इज इक्वल टू R1 square divided by R2 square. So the ratio of illuminating of two sources is equal to the ratio of the square of their distances. Ratio of the square squares of their respective perpendicular distance. Distance from a screen, where they produce the same brightness. This is the principle of a photometer. So thanks for today.